Staff Trophy for Best Performance in Engineering Discipline is won by Pakistan Naval Cadet Sergeant Imaduddin. Chief of the Air Staff Best Pilot Trophy for outstanding performance in flying training is awarded to Aviation Cadet Muhammad Sharjilur Rahman. Sword of Honor for overall best performance in College of Aeronautical Engineering is won by Aviation Cadet Wing Under Officer Muhammad Hassam Zafar. Sword of Honor for overall best performance in College of Flying Training goes to Aviation Cadet Abdul Manan Hassan. Thank you, sir.
Administration of oath. Ladies and gentlemen, now the oath will be administered to the graduating cadets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा और ये कि मैं पाक फिजाइया में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तामील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। आमीन। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़ज़ाइया के मुस्तक़बिल के इन अफसरान ने इस मुल्क और पाक फ़ज़ाइया का परचम हमेशा सरबुलंद रखने का अहद किया है।
May I now request the Honorable Chief Guest, Mia Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, to kindly address the parade. Bismillahirrahmanirrahim. Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Bismillahirrahmanirrahim. Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, Air Officer Commanding PF Academy Aصغر Khan, Honorable Minister of Defense and Minister of Information, Government of Pakistan, Excellencies, distinguished guests, faculty members, and my dear graduating cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am extremely pleased to address the graduation ceremony of combined courses from the Colleges of Flying, Training and Aeronautical Engineering. It gives me great satisfaction to witness the high standard of precedence and discipline, which has always been a hallmark of the PF Academy. Here I would like to congratulate all graduating cadets on the most memorable day of their life. It is also my pleasure to convey my heartfelt congratulations to the proud parents of these wonderful cadets, as well as faculty members of the Academy, for their exceptional efforts in grooming the future assets of our nation. My special appreciation goes to all the high achievers for their very well-deserved achievements. This singular honor is a result of their hard work, devotion, and unwavering commitment to duty. Dear graduating cadets, it is gratifying to note that PF's leadership has been making earnest efforts over the years to make this progressive organization a truly high-tech Air Force, a force which is second to none around the globe, as envisioned by the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad in April 1948. Today I can proudly stand here and vouch that our Air Force has always lived up to the Quaid's expectations and delivered on the task assigned to it. It has been a principal instrument of our national power and jealously guarded our air frontiers. The most recent example of PF's professionalism was our befitting and determined response to the Indian aggression in February 2019. The whole world saw how our brave sons of the soil humiliated the Indian Air Force in a show of exceptional skill and expertise. Over the last 2 decades, no other nation has been tested by a combination of challenges such as terrorism, extremism, and militancy the way we have. The manner in which our armed forces, including the Air Force, police and intelligence community, have risen to the challenge and neutralized the threats to our national security is simply outstanding, a fact known to our friends and foes alike. Ladies and gentlemen, all along our nation has stood behind their armed forces like a solid rock and will continue to do so to thwart the designs of anti-Pakistan forces. This mutual bond of love, devotion, and abiding reverence has remained unbroken. I have unwavering belief
that our armed forces will always live up to the expectations of the people in the future as well. My dear cadets, joining the Pakistan Air Force has been a cherished dream of our youth. You are indeed very lucky to be joining this prestigious force today as professional officers. As you embark on your careers, please discharge your duties with honor, integrity, discipline, and courage. The nation expects nothing less from you. Ladies and gentlemen, we live in challenging times that are being shaped by the evolving regional and global environment. Interplay of geopolitical and geoeconomic factors is having a profound effect on the world. I am aware that the cost of living crisis has added to the people's woes and adversely affected all walks of life. We cannot leave our people at the mercy of the disruptions in the global markets. We need to build resilience and protect our economy from global shocks. This is possible if we think long and hard and introduce structural reforms in the economy to make it sustainable. It is for this purpose that I have always been a strong proponent of the Charter of Economy. Let me assure you that we are making all efforts to bring our economy back on track. Alhamdulillah, thanks to the tough decisions at the cost of our political asset, we are on the way to overcome these challenges successfully, inshallah, one day soon. Ladies and gentlemen, Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace in South Asia without a just and a fair settlement of the Jammu and Kashmir dispute in line with the UN resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. We condemn the grave human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and urge the world to take note of the illegal changes introduced by India post-August 2019. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to especially appreciate Air Chief Marshal Zahir Ahmed Baba on leading this exemplary Air Force, and also congratulate his professionally competent team on their concerted efforts towards education, professional training, and grooming of this energetic youth. May Almighty Allah guide our efforts and grant us strength to serve our country with honor and devotion and with our blood and sweat. Ameen. I thank you all. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Paindabad. जनाब, आप इजाजत हो
तो फ्लाइट ले जाओ। तेरे नाम से है जिंदा दास्ताने अज़्म जसारत, तू हवाओं का है पाला, नई सुबह का उजाला, इसी शान से उड़े जा जा सितारा ता सितारा। Ladies and gentlemen, you will soon witness the Sherdils in spirit formation. The entire complement in perfect synchronization and coordination, formatting onto one another. The formation is being led by Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron, Wing Commander Shehzad Hussain. तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक ये खामोश फिजाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेश नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा देख, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। Sherdil 1 presenting salute to the proud nation of Pakistan and congratulations to the graduating officers. Pakistan, Zindabad. Passing over the graduating cadets as a farewell gesture, these aircraft indicate that from now on, the sky is truly theirs.
Drop! Up, teacher, top! The pred! ले जाओ! से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबो दाना, बयाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील गूं आसमां बेकराना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।
इस दिल गरमा देने वाली धुन पर मार्च करते हुए परेड कुछ ही देर में आपके सामने से गुजरेगी। ख़वातीनो हज़रात, इन कैडेट्स के जज्बे आसमान से बुलंद और चट्टानों से ज्यादा मजबूत हैं। पीएएफ एकेडमी अपने मोटो फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी के शायान निशान इन कैडेट्स में इकबाल के शाहीन की सफ़ात पैदा करने के लिए हमा वक्त सरगर्म है। ख़वातीनो हज़रात, आज ही कमान संभालने वाले एविएशन कैडेट एकेडमी अंडर ऑफिसर अली हारिस की क़यादत में परेड सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए, इनके अकब में एविएशन कैडेट विंग अंडर ऑफिसर सैयद आगा महमूद हुर मेहदी नंबर 1 विंग की क़यादत कर रहे हैं। एविएशन कैडेट स्क्वाड्रन अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला शकील की क़यादत में नंबर 4 स्क्वाड्रन के चाको चौबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने सलामी पेश कर रहे हैं। किताबे मिल्लते बैज़ा की फिर शिराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बर्गो बर पैदा। जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। स्टैलियंस के नाम से मंसूब नंबर 3 स्क्वाड्रन के दस्ते एविएशन कैडेट स्क्वाड्रन अंडर ऑफिसर मोहम्मद सुलेमान अब्बासी की क़यादत में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए, खुदाए लम यज़िल का दस्ते कुदरत तू, ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। अब नंबर 2 विंग एविएशन कैडेट विंग अंडर ऑफिसर अहमद मलिक की क़यादत में, इनके अकब में नंबर 2 स्क्वाड्रन के बुराकियंस पाकिस्तान नेवल कैडेट स्क्वाड्रन अंडर ऑफिसर रजा नदीम की क़यादत में सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए अपने मखसूस अंदाज में सलामी पेश कर रहे हैं। मकाफानी मकीयानी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एविएशन कैडेट स्क्वाड्रन अंडर ऑफिसर उमर खालिद की क़यादत में चीतास के नाम से पहचाने जाने वाले नंबर 1 स्क्वाड्रन के चाको चौबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरते मीना दे। और आखिर में पीएफ बैंड अपने रवायती अंदाज में सलामी पेश कर रहा है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल, ताऊसो रुबाब आखिर। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके
पासबां हैं, वो पासबां हमारा। तैगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। Ladies and gentlemen, you will now witness continuity drill by Hamza flight. This flight is named after Hazrat Amir Hamza, Raziyallahu Ta'ala Anhu, one of the companions and beloved uncle of the Holy Prophet, peace be upon him. It is a unique way of cadets to pay homage to one of the great commanders of the Islamic history. It is noteworthy that Hamza flight is composed of specially selected cadets that include gentlemen cadets, naval cadets, and lady cadets that are trained over a span of 6 months to present this remarkable display. Ladies and gentlemen, during this activity, blank cartridges will be fired. You are requested not to panic. ख़वातीन व हज़रात, इस मुज़ाहिरे के दौरान खाली कारतूस फायर किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इन आवाज़ों से हरगिज़ परेशान ना हों। To commemorate the supreme sacrifices made by Shuhada of Pakistan Air Force, Hamza flight will now carry out a synchronized movement.
पाक फौजिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। زدبانگ کے شاہی نمو کارم بزمی چیز سہراس کے دریاس تہبال و پرماس۔ معزز خواتین و حضرات، دور حاضر کی پاک فضائیہ محض جنگی جہازوں، شاندار روایات اور بہترین تربیتی اقدار سے آراستہ فوج ہی نہیں، بلکہ پاکستانیوں کے دلوں میں بسا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر آزمائش، دکھ سکھ، کٹھن حالات اور زمانہ امن میں پوری قوم کے شانہ بشانہ موجود رہا ہے۔ Ladies and gentlemen, today under the dynamic leadership of Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Nishan Imtiaz Military, Pakistan Air Force has modernized through smart inductions of latest technologies like the J-10C, enabling regional balance of power. معزز خواتین و حضرات، دل تھام کر بیٹھیے کہ اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد پی ایف اکیڈمی اصغر خان کی فضاؤں میں پہلی مرتبہ پاک فضائیہ کے صف اول کے جنگی طیارے اپنی بھرپور گھن گھرج کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے اور یکے بعد دیگرے فلائی پاسٹ پیش کریں گے۔ اس فلائی پاسٹ کی ابتدا پاک فضائیہ میں ہراول دستے کی حیثیت رکھنے والے معراج طیارے کریں گے جو اپنی رفتار اور فائر پاور کی بدولت پہچانے جاتے ہیں۔ معراج طیاروں اور پاک فضائیہ کا ساتھ نصف صدی پر محیط ہے۔ Ladies and gentlemen, to create a shock and an awe, running towards the venue, the dynamic Mirages, which belong to number 27 squadron known as the Zarrars. خواتین و حضرات، آج یہاں فلائی پاسٹ پیش کرنے والے معراج طیارے 300 فٹ کی بلندی اور 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی پیش کریں گے۔ اس فارمیشن کی قیادت ونگ کمانڈر عثمان کر رہے ہیں، جن کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر علی محو پرواز ہیں۔ زرارز کا نعرہ ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ اپنی نگاہیں مرکوز رکھیے سامنے افق پر کہ پاک فضائیہ کے معراج طیارے کسی بھی لمحے نمودار ہوئے چاہتے ہیں۔ اور وہ خواتین و حضرات، تیزی کے ساتھ سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن زرارز۔ Now, ladies and gentlemen, running in towards the venue, the game changer, the predator, the vigorous Dragon J-10C aircraft. خواتین و حضرات، آج یہاں فضائی سلامی پیش کرنے والی J-10C فارمیشن کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 15 اسکواڈرن سے ہے، جس کی قیادت ونگ کمانڈر امتیاز رحیم کر رہے ہیں۔ دیگر ہوا بازوں میں اسکواڈرن لیڈر طلال، اسکواڈرن لیڈر حسن، اسکواڈرن لیڈر ذیشان اور ونگ کمانڈر وجی اللہ شامل ہیں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے، اجدر اور یہ J-10C کی جانب سے سلامی کا دلکش انداز۔ Ladies and gentlemen, throw your gaze right in front as approaching the venue, enemy's biggest nightmare, 4 state-of-the-art F-16s from number 9 squadron, the Griffins. آفیسر کمانڈنگ نمبر 9 اسکواڈرن ونگ کمانڈر محمد عباس نیازی کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹنٹ اشہد، اسکواڈرن لیڈر اسد اور پی ایف بیس مصف کے بیس کمانڈر ایئر کوموڈور سجاد نوری پر مشتمل ہے۔ ان ہوا بازوں کا نعرہ ہے، بازوئے ہمت سے ہے شوق پرواز۔ نگاہیں مرکوز رکھیے سامنے افق پر۔ اور یہ گریفنز کی جانب سے سلامی کا ایک خوبصورت انداز۔ And now a
appearing on the horizon. Making its first public appearance, the nation's pride, state-of-the-art fourth generation, a formation of 4 JF-17 Thunder Block 3, which belonged to number 16 Squadron, known as the Black Panthers. थंडर फॉर्मेशन की क़यादत 16 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर सरमद कर रहे हैं, जिनके हमरा स्क्वाड्रन लीडर अदनान, स्क्वाड्रन लीडर एतजाज और स्क्वाड्रन लीडर अली खान महवे परवाज हैं। ब्लैक पैंथर्स का नारा है दलेरो दुरुस्त। Panthers, stand by bombers. Bombers, bombers now. और ये JF-17 की जानिब से बॉम्बर्स का खूबसूरत अंदाज। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया शानदार रवायात का एक ऐसा तसलसल है जिसने जंगी हवाबाजी में अपना तशख़्ख़ुस वाज़े तौर पर मनवाया है, और आज पाक फ़िज़ाइया अपनी पेशावराना महारत, फनी बरतरी और बेहतरीन लीडरशिप की बदौलत दुनिया की ताकतवर तरीन फ़िज़ाई अफ़वाज में शुमार होती है। अब से कुछ लम्हों बाद आप एक ऐसा फ़िज़ाई मुज़ाहिरा देखेंगे जो आप पर सहर तारी कर देगा। Ladies and gentlemen, whenever the word formation aerobatics is discussed anywhere, one name pops up in the mind: the Sherdils. Soon you will witness the Sherdils appearing in front of you in a 9-ship complement, emitting green and white smoke, representing colors of Pakistani flag. Today the Sherdil team is being led by Wing Commander Shehzad Hussain, officer commanding Advanced Jet Training Squadron. Flying on the right of the leader are Squadron Leader Muazzam Shakur and Squadron Leader Ali Raza, whereas on the left are Wing Commander Muhammad Ghufran Yusuf Zaid and Squadron Leader Uzair Aziz. Slot position is being maintained by Squadron Leader Junaid Sarwar. Wing Commander Hamad Malik, Squadron Leader Uzair Ghafoor and Squadron Leader Zubair Khalid are flying. Venue for the next maneuver called the aileron roll. परेड वेन्यू के दाएं जानिब से शेरदिल 9 अपने अगले मुजाहिरे के लिए दाखिल हो रहे हैं, जिसको फिजाई इस्तिलाह में aileron रोल कहा जाता है। और ये सलामी के चबूतरे के सामने aileron रोल का एक दिलकश अंदाज। 9 exit venue. Scheduled in for battle.
Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils will now run in for a formation barrel roll. Smoke on. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching, and yawing. Pull up. Pull up. Pull up now. अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं। Quarter leader Junaid Sarwar performing twisters around the formation. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। Smoke off. Sherdil 789, setting course for Shaheen break now. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, directly in front of you above the horizon, number 7 Wing Commander Hamad Malik, number 8 Squadron Leader Uzair Kapoor, and number 9 Squadron Leader Zubair Khalid will run in to perform the Shaheen break. While flying in a close formation, number 8 and 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other, with number 7 pulling up from within. This high G maneuver is basically used in air combat to defend against an enemy missile.
शरकत की तस्वीर ललकार के देखे तो कोई सर बकफन हूँ शाही हूँ खुश रंग दिलो जाने चमन हूँ. We are extremely grateful to our honorable chief guest for gracing the occasion. Ladies and gentlemen, guests and parents of the cadets are requested to remain seated till the time the conducting officers escort them for refreshments. I thank you all for being with us today in making this event memorable. पाक फिजाइया अकेडमी अصغر खान में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवक्कार तकरीब आप मुलाहजा कर रहे थे. वजीराइज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब